नमस्कार फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये चीज़ें वो हैं जिसकी बदौलत इंसान आज बहुत कैपेबल है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसने बहुत इन्वेंशंस किए हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज इंसान ने कर ली। तो वो चीज़, वो पैरामीटर्स क्या हैं, वो पैमाने क्या हैं, उनके उसमें उनमें ऐसी क्या खास बातें हैं जिसकी बदौलत इंसान आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है और नेचर को डोमिनेट करने की प्रयास में लगा हुआ है। दोस्तों, एक जो सबसे अहम बात है जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंशियल कहते हैं, अहम बात को, वह यह है कि इंसान के अंदर दो गुण बहुत जरूरी होने चाहिए। और वह गुण क्या है सफलता के लिए? वह है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है? जानने की जिज्ञासा। चीजों को जानने की जो जिज्ञासा है उसे क्यूरियोसिटी कहते हैं। और दूसरी चीज है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है जो देखा गया है, वॉट एवर हैज बीन सीन, वॉट एवर हैज बीन विटनेस्ड एंड बीन आइडेंटिफाइड, जिसे समझ लिया गया है, उस पर कुछ क्रिएट कर लेना, उस पर कुछ नया बना लेना, उस पर कुछ इन्वेंशन कर लेना, नए आइडियाज को प्रेजेंट कर लेना। ये कैपेबिलिटीज जो है, ये सामर्थ्य जो है वो इंसान में, और जो अद्भुत क्षमता है, जो मैग्निफिसेंट पावरफुल पोटेंशियल है इंसान का, वह यह है इमेजिनेशन। आज हम देखें तो चाहे आप धरती से लेकर आसमान को देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ी है, उसके पीछे इंसान का एक लंबा स्ट्रगल है, उसकी एक लंबी कहानी है जो एक दिन में नहीं हुई, एक महीने में नहीं हुई, कुछ सालों में नहीं हुई। उसके पीछे कई सदियों का प्रयास है, एक लंबा समय है इस जर्नी का। एक समय वह था जब इंसान जंगलों में रहा करता था, घूमा करता था। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री, वॉन्डरर था। इंसान को इंसान बनाने वाली अद्भुत क्षमता क्या होती है? ये उसकी इमेजिनेशन है, और राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है, ये उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब एक निश्चित रूप से जो मैं कहना चाहता हूं वह यह बात है कि अदम्य साहस, इनडोमिटेबल करेज, इनडोमिटेबल फेथ, एक ऐसा फेथ और करेज जिसे डोमिनेट नहीं किया जा सकता। आपके पास बहुत इनकैलकुलेबल वेल्थ है, आपके पास अथाह एसेट है, क्षमता है, और वो एसेट क्या है? आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, आपको अब खुद को समझ लेने की क्षमता, पोटेंशियल। और जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है, whenever you understand yourself, then the journey begins to identify your strengths and weaknesses and continuously work upon them to improve and improvise your life. तो सतत प्रयास करते रहना, कठिनाइयों के बाद भी, हजार बार गिरने के बाद भी वापस से खड़े हो जाना, ये इंसान की सबसे बड़ी क्षमता है। और ये तो एंड्स में भी होता है, चींटियों में भी होता है। बार बार वो वॉल को क्लाइंब करने में, it slides many times but ultimate objective is to climb the wall। तो
आपका जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। पहली चीज है परसिस्टेंस। डिफिकल्टीज के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, इंसान को स्ट्रगल करते रहना चाहिए, जिससे सेल्फ अवेयरनेस का जागरण होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, और वह इंसान न केवल खुद को, not only self awareness and introspection, but also he is able to observe the surroundings. So it is the greatest strength of the human beings. And therefore, if you see today, there is no lack of resources. Resources are full, abundant. And what is the requirement? To actually use and utilize these resources with the proper understanding. And that's what is very, very crucial thing. यही वह चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। Resources are not deficient in anywhere in the world. Whether it is, if you see, you can see the mobile in every hand in the market. If you see the rural people, the semi-urban people, and the urban people, there is actually, if you see the understanding, the kind of revolution that has taken place in terms of accessing the resources को एक्सेस करने के लिए जो इंसान का पोटेंशियल है, रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, चाहे वो एनर्जी के रिसोर्सेस हो। ये अलग बात है कि आज दुनिया स्ट्रगल कर रही है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को ब्लॉक किया गया है। तो फ्रेंड्स, इंसान बहुत मिरेकुलस है, लेकिन बहुत डिजास्टर्स भी है। ये भी हमें समझना है। जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं मोबाइल, बहुत ही बेनेडिक्शन का टूल है, ब्लेसिंग्स का टूल है, बट ये बहुत डिस्ट्रॉयर भी है और डेवेस्टेशन भी क्रिएट करता है, विनाश भी क्रिएट करता है, न केवल मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ सोशल स्किल्स। तो दोस्तों, पहली चीज है परसिस्टेंस। इमेजिन समथिंग। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ मोशंस आप देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, द एयरक्राफ्ट्स एक्चुअली फ्लाई इन द स्काई। इफ यू सी, दिस इज actually very, very crucial to understand. A person sitting somewhere imagined the wonder of nature and he started to discover. उसने discover करना शुरू किया and see the breakthrough, that the potential of that innovation and discovery, when there was no artificial intelligence around, there were no phones around, telephones around. In these kind of circumstances, Newton has worked pretty hard to discover through the persistence. कठिनाइयों के बाद भी लड़ते रहना, and you have to understand one thing: life is not one that you are living. It is a product of many lives. And science also proves it genetically. It also is in their DNA. So I have talked quite a different platform about that. So persistence and the ability to bounce back even in most unpleasant and destructive situations. बहुत ही खराब परिस्थितियों में भी, आपदा वाली स्थितियों में भी इंसान का रेजिलियंस कमजोर नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, इरोड नहीं होना चाहिए। और ये जो कैपेबिलिटी है इंसान की, वह उसको इस प्लैनेट में ही नहीं, इस कॉस्मोस में सबसे अनइमेजिनेबल, मैग्निफिसेंट, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी बनाता है। Dear friends,
दूसरी चीज जो मैंने बताया, रेजिलियंस। पहला परसिस्टेंट, रेजिलियंस एंड कंसिस्टेंसी। Consistency, when you start doing something, you have to keep on again and again and again, even after falling many times in your life. And this is the capacity and ability of a human being to inculcate these values, that irrespective of the ordeals, irrespective of the danger and risk involved, you have to take initiatives. You have to keep on the track, and you don't have to count on the people. Their notions and perspectives are fleeting, they are getting changed. And this is the fallacy. I heard about an IAS officer, now CBSE chairman, Mr. Rahul Singh. Is actually the comparison, the constant in the face and expression was coming quite clearly, that when the questions were asked by 2 or 3 vice principals or principals, some of the questions, to reply to that questions, he was not comfortable. So you can understand that positions do not matter, and still holding the highest position in the private CBSE schools, and he's having the kind of personality and knowledge. I know his history, that he's a very capable officer, the kind of the officials, and he was actually selected and appointed as a chairperson because he was very brilliant and outstanding in terms of computer science, and he has done that masters, and therefore after that PhD. So we have to understand very clearly that be observant, notice your surrounding, and try to figure out, try to decode the things. Now you see, the paperwork have stopped, and now new things have started. So we have to cope. The adaptability is required at this time. What is adaptability? To be able to cope with the present situation even after discomfort and unpleasantness. And this is very important when you are assimilating the values of persistence, resilience, consistency, and determination. And not only determination, firm resolution. Dear friends, this is very important to be successful in the life. And I have understood that the progress and development is not a one-day journey. It is a constant journey. This journey ensures that it requires a lot of sacrifice, whether it is time or energy or physical health. So if you are tenacious, there is a tenacity. Tenacity brings a courage, and a person is able to renunciate and shun the cowardice and see the values in the constitution of our country. If you think about that, you'll find great things. और आज की परिस्थितियों में जैसा हमने देखा है, things are not difficult. People, one thing in very problematic in our country, when in schemes or whether it's academic or other schemes are there, any organization, smooth conduction and streamlining becomes pretty impossible. And there are some repercussions of that. And the kind of institutions, they are, I heard quite very clearly yesterday that the issues, whether these are the technical issues, connectivities, or semi-urban schools or rural schools, they are not equipped with the kind of approach. I have seen the people, because of they are not adapted to these situations.
सिचुएशन पे अडॉप्ट करने की, अडेप्ट करने की क्षमता नहीं है, एंड देयरफॉर दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. So today we have to understand this is the transitional stage. This is the time when the change is taking place very rapidly, and therefore one has to equip with these changes and to understand the decode and to decode the kind of things that are in the surrounding. Because this is fast-paced technology, and I have talked about it because there is only one thing: motivation. Motivation is the tool that keeps you on the track with the indomitable faith, persistence, consistency, and indomitable, resolution, firm resolution, and tenacity. Dear friend, these things are very important if you want to become successful. Because if you see my video, when I post the video, if you don't understand, don't watch, don't listen, अगर आप नहीं सुनोगे properly, तो these things you cannot figure out कि what are these are the experiences of the life that I tell you. These are not the actually rote learning. I have not actually crammed these things. These are the experiential, and I have taken actually experience from different things, and I have understood quite very frankly about the parameters, about the norms, whether they are societal, whether they are technological, and whether they are academics, and any other field of law. It's my ability to learn the things. Still I am a learner, and this is my strength that I display and demonstrate. This is why whatever you see in the surrounding, this is a manifestation of the ideas and perceptions that are inside, and they are quite very wonderful, but at the same time they are dangerous if you are not taking care of these things and not having the person who is biased. And see the education, academics and everywhere, this is in vogue, in prevalence, that adopting unbiased approach. Being prejudiced is an illness, and that actually presents and produces arrogance, and arrogance leads to disastrous outcomes. A person who is self-centered, everything is revolving around him, and he wants to actually fulfill his greed, his ego, and his, the kind of prejudice and other things. So these things are very dangerous. So first of all, पहले prejudice को निकालिए, पहले unbiased रहिए. There should be no any bias, and then try to be rationalized that how to make a plan to become a successful being. कैसे सफल हो, plan बनाए. Identify your strength and weaknesses. Both things are very important and crucial. So dear friend, I wanted to talk about, NEP 2020 and the kind of transition that is going to take place in different stages to phase out the traditional learning and teaching pedagogies. So that I will talk later on. Thank you so much. God bless you. Thank you.